Okay. There is a very beautiful mantra. आप में से कई जनों ने सुना होगा, कई जनों ने नहीं सुना है, तो आज आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत मंत्र है. The mantra is Asatoma Sadgamaya. Asatoma Sadgamaya. Tamsoma Jyotirgamaya. Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Okay. Asatoma Sadgamaya. So if you all want to say it with me, you should try and say this. Asatoma Sadgamaya. Asatoma Sadgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Mrityorma Amritam Gamaya. Repeat that. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. So we will start with the first line. Asatoma Sadgamaya. Asatoma Sadgamaya means we are praying to the divinity that please bring me from ignorance to knowledge. I am ignorant. Please, can you bring some of this light of knowledge in my life? असतोमा means मेरे को झूठ में से सत्य में ले आओ. Tamoso is darkness. So from ignorance. Okay. Or from falsehood. Yeah. Okay. From false to the truth. Yes. Can you bring that into my life? From ignorance to intelligence. Please, can you bring this in my life? That is the first statement. Today, I want all of you here to be truthful to yourself and write down what are those false statements, those ignorant statements that you are living with in your life today. वो सारी कौन सी चीजें हैं जो आप अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं, पर वो सही नहीं है आपकी जिंदगी में? वो कौन सी वो सारी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में एक झूठ की तरह जी रहे हैं? वो कौन सी चीजें हैं where you are being ignorant about something? You may know it, but you are being ignorant about it. For example, I'll give you just a small example. I have in fact written these examples. For example, what are the things you are lying to yourself about? Okay. What could they be? Is I can't do this. ये मेरे बस की बात नहीं है. It's a lie you're telling yourself to convince yourself. Okay. I am super fit. मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं है. That is a lie. Okay. I am very disciplined. I don't need to change. What is wrong with my life? I can't give up sugar. It's impossible, yeah. उसके बिना रह ही नहीं सकते. Are you convincing yourself? So what are these things that you are lying to yourself about? What are the things you're being ignorant about? ये कौन सी चीजें हैं जो आप एक झूठ के सहारे जी रहे हैं? और लिखने से पहले ना वहां पर एक काला रंग का कौवा बना दो, क्योंकि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा. कौवा काटा. So let that crow remind you that if you lie, you can't get away now. Because now we are praying to the divinity to bring us from ignorance
to intelligence, from false to truth, from the lies to the truth. Lot of things. तो वो कौन सी चीजें हैं? Let's be truthful to ourselves. कि या तो हम कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, या हम कहते हैं ये तो मेरे पास है यार. Oh, he loves me a lot. Maybe you're living in ignorance. You're living somewhere which is not meant for you. You're living in falsehood. क्या है वो सारी चीजें? I think अगर हम लिखने जाएंगे ना तो पूरा पन्ना भर जाएगा. तो जो अपने मन में अभी आता है, अभी के लिए लिखिए. चाहे वो 5 चीजें हो, चाहे वो 10 चीजें हो, लेकिन सच्चाई से लिखिए. अपने आप के लिए लिखिए, क्योंकि ये आपकी बात है, आपकी जिंदगी है. और जो भी लिखोगे ना, ये इससे आपको फर्क पड़ने वाला है. सो आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, बी ट्रूथफुल टू द गुरु विद इन यू, बिकॉज यू आर योर बिगेस्ट गुरु. हम सब अपने ही सबसे बड़े गुरु होते हैं. तो आज तुम अपने गुरु से क्या कहना चाहोगे? सच्चाई या झूठ? So then what are the truths? What are those false beliefs you are living in? Take your time, think about it. If you're ready, you can share. Asatoma Sadgamaya. Purvi has just joined us. So Purvi, can we have your video on? I would like to share with you what we are doing right now. Okay, who would like to share? Anybody? Purvi, we are doing an exercise on a beautiful mantra. और वो है असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय. So Asatoma Sadgamaya is praying to the divinity to bring us from ignorance to intelligence, or from false to the truth. So what are those lies that you're living with in your life? What are those false statements that you're living in your life with? So I gave an example, for example, that I can't do this. ये मेरे बस की बात नहीं है. It's a false statement which you are probably wanting to convince yourself of. I'm super fit. Exactly. Okay. I can't give up sugar. No, no, no. नहीं हो पाएगा मुझसे तो. I can't fast. I can't fast. Okay. I'm perfectly healthy. I'm perfectly alright. I don't need anybody's help. So what are they? You have to write down. Okay. So can somebody share in the meantime? Or would any, if you don't want to do it also, it's perfectly okay. You can keep it to you. No problem. You can have this for yourself. And Nipur, is this a false statement if I say I don't take care of myself? I always neglect myself.
That is the truth. Wait, That's what, yeah. Just wanted to know that. that is the truth. So Mm. you are doing the truth now. I take full care of myself is a false. Okay. I don't take care is the truth. Truth. I need help is the truth. I can give up sugar is the truth. Truth. Yeah. In fast. We, Yes, means this is a false statement. I can't lose my weight. I can't lose weight is a false statement. Yeah. So anything we say negative is a false statement. Even if you are Nay, if we can do and if we tell we can't do, that's a false statement. We can do and we tell we can't do. I can do everything. That's not, that is also a false statement. No, right? Think about it. Can you do everything, or can we say I can do everything on my own? No. That would be a false statement. Means मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ अपने आप कर सकती हूँ. That is a false statement. But isn't that a motivated statement? I mean, we always say, oh, I will do everything on my own. That is a positive statement altogether. We write in our journaling and all. So then I can make things possible for myself okay. is a truth statement. I can make things possible for myself. Can I make all those things possible for myself by myself? No. Can you think about your life without your family support, without your children's love, without your parents' guidance, without your friends, without your help? Can you think of life without your maid? We cannot. We are No. social beings. Human beings are social beings. हम बने ही इसके लिए हैं ताकि हम एक दूजे के साथ बनकर, एक दूजे के साथ रहकर अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं. हमें लगता है कि हम अकेले सोलो में हर कोई चीज कर सकते हैं और उसमें हम अपनी पूरी खुशी पा सकते हैं. हो सकता है. Maybe, yes, it could be a possibility. It's not that it is impossible. But that means you are a yogi living in solitude within yourself. Are you today a yogi who can live in solitude with themselves and find solace? Can we do that? या हम एक पारिवारिक जिंदगी जी रहे हैं? क्योंकि अगर हम एक पारिवारिक जिंदगी जी रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर सोशल बीइंग्स. और अगर हम सोशल बीइंग्स हैं तो हमें तो आसपास सब चाहिए ना. तो हम किसी का सपोर्ट बनते हैं तो वो हमारा सपोर्ट बनते हैं. And this brings us to that thought that as human beings, we are still better givers because we love to give. We love to help somebody. We love to do something for somebody, but we are very bad takers. Think about it. We don't like to take help. We think we can do everything on our own. हमें कोई कुछ देता है ना तो हम लेने से पहले ये सोचते हैं अरे बाप रे इसको अभी देना पड़ेगा, है ना. अगर लिया है तो देना तो पड़ेगा. कोई तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आया, तुमको गिफ्ट दिया, तो तुमको ऐसा लगता है अरे अभी तो लिख के ले लो क्योंकि अभी इसको भी देना है. किसी का भार नहीं उठाना है, लिया है तो देना तो पड़ेगा. We are very bad takers. And I have been in that shoe where in fact, there was a time when I don't know in what zone I was, I had declared to all my family
कि now I don't want anything from anybody. अब से मैं किसी से कुछ लेने वाली नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत इंक्लूड किया करो. And I am one of the eldest bahus. तो मैंने सारी मेरी सिस्टर इन लॉस को कहा था कि प्लीज अपने फैमिली वालों को भी बोल दो, मुझे ना I don't want to take anything. I don't want to collect this karma. मुझे नहीं चाहिए. And I had gone one to, stay with my Guru Ma. And unbelievably, I think they know, na. And she said this, such a beautiful thing, that why is it कि हम खुशी से, दिल से, पूरे इसमें से अगर कोई तुम्हें दे रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान तुम्हें ऐसे ही अचानक से कुछ दे रहा है? It is meant to come to you. That is why it is coming to you. You have no say in it. The opposite person also has no control on it, because they are not doing it. It is only meant to come to you. That is why it is coming to you. Now it is up to you whether you reject it or whether you accept it. And the more with elegance, the more with full heart, the more with love, if you accept, then it becomes abundant. So you can make abundance out of it. So thinking, मुझे ये चीज की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए. Abhi, All these are false statements that we are living with. So I hope everybody's got your false statements in your book. Please think about it even more deeply when you finish today's session. What are those false statements or lies that I'm living with? कौन सी वो सारी चीजें हैं? Because now it is time to convert those false statements into truth, to convert that ignorance into intelligence, to convert all that is not mine, not me, into taking ownership of me. This is my responsibility. I'm supposed to do this. Because whatever we do, whatever we decide, at the end of it, it is your decision. You have to take ownership. That is a different thing, that you are not the doer. It becomes very deep thinking. You are not the doer. Somebody else is doing it. You are just following. It becomes a completely different truth. But for now, we need to work on this truth in front of us. Tamasoma Jyotirgamaya. Bring me from darkness into light. मेरी जिंदगी में रोशनी भर दो. ये जो अंधेरा है मेरी जीवन का, इसमें आप रोशनी भर दीजिए. What does this statement mean to you? For me, it means emotion. What are the emotions that bring darkness in my life? Jealousy, hatred, dislike, greed, Anger. anger, sadness, expectations, then criticism. Don't they bring darkness in our life? What else do you think brings darkness in your life? Negative thinking. Negative thoughts. What you think is what you are. So negative thoughts bring darkness in our life. What else brings darkness? Ego. Ego. छोटू है पर मोटू है.
Ego. So true, no? Ego. What else? Ahankar. Ahankar. Being not thankful for, like, not grateful for anything. Ungratefulness. Ungratefulness, yes. Taking things for granted Right. brings darkness in our life. Not being truthful to our body, physical body. Physical body. What you see is a physical body. Are we being truthful to this physical body? If you're not doing justice to this physical body, it will bring darkness in your life. For example, if you don't use it, you will lose it. So अगर इस शरीर का तुम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो इसको खो दोगे. ये शरीर हिलने डुलने के लिए बना है. अगर आप हिलोगे नहीं, काम नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो क्या होगा? आपकी जिंदगी में बीमारियां आएंगी. Your life will be full of darkness. You will fall ill, and then there will be no happiness. So doing injustice to your physical being. We are very, you've heard this statement, I'm not the body, I'm not the mind. A lot of people have heard it now. There's a lot of meditation happening. But if you are in your physical being, then are you not the body? If you are right now on this earth, in your physical being, then are you not the body? If you are in this world, in your physical being, then are you not the mind? So it is not that you're not the body, you're not the mind. It is, I am beyond my body and beyond my mind. The positive statement of this is, I am beyond my body. If you are looking at I am, who am I? Who am I? I am beyond my body, beyond my mind. I'm an astral body. I'm a soul. So we say, I'm beyond my body, I'm beyond my mind. But can I say, I'm not the body, I'm not the mind? How can you? Because you are in your physical being right now. Your physical being is saying what you're saying. Your physical mind is saying what you're saying and feeling and doing. It is your physical being at present on this earth, because you decided to come on this earth. आपने decide किया था और आप आए हो. तो अगर आपने decide किया है और आप यहाँ पर हो, so then we have to accept that I am the body, I am the mind. But who am I? If I am the soul, then I am beyond this body and I'm beyond this mind. But do I have to do justice to this body and justice to the mind while I am here? Yes. Isn't it? Think about it. जब तक मैं यहाँ हूं, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक इस बाहरी शरीर में हूं, तब तक इस शरीर पे प्रति मेरी जिम्मेदारी है. तब तक इस दिमाग के प्रति मेरी जिम्मेदारी है. तो जब तक मैं हूं, इस शरीर में हूं, ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है. I am the body, I am the mind. If I am a soul, I am beyond this body, I am beyond the mind. So what is that darkness within you, within me, that does not allow us to see that light? Don't look at general statements. आज जो आप लिख रहे हो, अपने आप के लिए लिखो. अपने आप के अंदर झांक के देखो कि वो आपके अंदर कौन सी चीजें हैं
जो आपको रोशनी की तरफ जाने नहीं दे रही। When you are walking in a tunnel of darkness, वो कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है कि उस टनल के आखिर में जो रोशनी है वहां तक आप जा नहीं पा रहे? आप अपने अंदर देखो कि वो क्या है। जनरल स्टेटमेंट्स पे मत जाओ। ओनली लुक एट योर लाइफ टुडे। इज इट योर लेजीनेस? इज इट योर ईगो? व्हाट इज इट? इफ इट इज माई ईगो, व्हाट इज माई ईगो अबाउट? वो देखो। मेरा ईगो अगर है तो वो कौन सा ईगो है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूं या बढ़ पा रहा हूं? ये आप लिखिए। स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। वो कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है? वो कौन सी चीज है जिसके वजह से मैं अंदर से अपने आप से पूर्ण तरह से प्यार नहीं कर पा रहा हूं? अपने आप से या दूसरों से मैं पूरी तरह से दूसरों को दे नहीं पा रहा हूं। दोनों हाथों से, दिल से, हर चीज से मैं पूर्ण रूप से बांट नहीं सक रहा हूं। थिंक ऑफ दैट डार्कनेस। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। फ्रॉम mortality to immortality. Ma, bring me from mortality to immortality. What does that mean? Does that mean कि okay, now make me immortal? Give me the Amrit and make me immortal. You are already immortal, by the way. ये तो सिर्फ एक शरीर है, थोड़े साल के लिए आया है, अपना कार्य करेगा, ये शरीर चला जाएगा, लेकिन आप तो वहीं रहोगे। फिर आप दूसरे रूप में वापस आओगे। तो अगर हम ये जर्नी पूरी तरह से करना चाहते हैं, so from mortality we want to go to immortality. How do you think you can do that? Means मैं जो कर्म लेकर आया हूं इस जीवन में, क्या आप वो कर्म, आपको लगता है आप पूरी कर रहे हो या पूरा कर रहे हो? और अगर कर रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो? Are you doing it willingly, happily, accepting what is coming your way? Or are you all the time questioning why me? Are you questioning why this is happening to me? Are you angry and always going to the mandir and saying, Bhagwan mujhe ye de do, Bhagwan aisa kara do, Bhagwan ye kar do? Are you always asking? Yes. Yes. Do you think if you're going to keep doing this, you are going to reach immortality? No. Moksha. In the feeling of bliss, without going to mountains, without being a yogi, without all of that. Do we need to do that? No. Not everybody's path is a yogi path, by the way. सबका पाथ नहीं होता है वो। हमारा गृहस्थी का पाथ है। तो गृहस्थी करते करते क्या हम मोक्ष नहीं पा सकते? क्या हम अपना जीवन ब्लिसफुली नहीं रह सकते? या हर बार, हर समय, हर चीज में हमें सिर्फ मांगना है? So from mortality to immortality, from expectations to satisfaction, from always asking to giving. How can I become the one who lives with gratification rather than expectations? How can I be the one? Help me to become the one who, instead of criticizing, does validating. मैं हर चीज में अच्छाई ढूंढूं. Now you have to write.
What are those things which are not allowing you to be blissful, to be in the state of being? What are those over expectations? What are those obstacles in your way which are not allowing you to be you? Are you expecting too much from yourself? Are you always criticizing and finding something or the other? Are you always asking from your parents, asking your children to do something or the other, be the way they are supposed to be, asking your husband for love or your wife for love, expecting that from them? Are you always expecting your God to answer your prayers? Because all of this is taking you away from immortality. And what we need for this, Amrit. Where is that Amrit? Here, within you. Right here. So are we speaking the right things? Are we chanting the name of God or that is living within me? Are we speaking the truth or do we lie? All day we do that. Chote chote jhoot, chote, small lies we do. Small lies, not big ones, small lies. Write down all those small lies that we say all day. सोचो आज का दिन, पूरा दिन में छोटे छोटे झूठ क्या क्या बोले हमने? छोटे छोटे, वो बड़े नहीं होते हैं, वो छोटे ही होते हैं. I don't have the time. Small lies, even small expectations, small criticisms. Everything you do, you say, takes away that Amrit. So what are these things? Says right, yes. Take your time and write them. If you want to share, you can. If you have a question, please ask. Gupta ji, you are on mute. When you say, I don't have time, ये झूठ है. झूठ है ना? क्यों? 24 घंटे तो सभी के पास होते हैं. अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आपके पास समय नहीं रहेगा. अगर आप प्रायोरिटाइज करोगे चीजों को तो आपके पास हमेशा समय रहेगा. दूसरा, टाइम क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. तो या तो हम अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं क्योंकि हमको लगता है हम मल्टीटास्किंग में सुपर्ब है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है. आई एम अ मल्टीटास्कर. इट्स अ लाई. We are not meant to be multitaskers. We are meant to be meditative in every task we do. And that is possible only if we do one task at a time. Think about this. We can only be meditative in every stage only if we do one task at a time. उसके वजह से हो सकता है आप 10 चीजों के बदले आप 7 चीजें करेंगे पर दिन, बट कम से कम यू विल डू इट 100%. I agree. तो फिर it is a false statement. It is that expectation which takes you away from the Amrit.
from the sense of blissfulness, because then you're in stress. बाप रे ये भी करना है, अरे ये भी करना है, ओ हो आज ये नहीं हुआ. Then you're screaming, then you're shouting, then you're doing, अरे यार क्या कर रहे हो तुम? So then you're shouting at all your loved ones. Then you're shouting on your office people. All this we do because we are expecting too much. Aum Shanti Shanti Shanti. Aum is the universal truth. Is Aum. किसी दिन हम आउम को, एक्चुअली आपको मैं बताऊंगी, बहुत खूबसूरत चीज होती है आउम. जिस तरह से वो बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत होता है. आउम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजस, सात्विक एंड तमस. आउम. ओके, all three you need in your life. So all three are a part of it. Brahma, Vishnu, Shiva. So Brahma is Sattvic, Sattva. Vishnu is Rajas, that is the maintenance, the maintainer. You live like that. And Shiva is Tamas, the destroyer. But you need all three in your life. And they are all combined and it creates the universal truth, which is Aum. So that is why before we say anything, we say Aum. Because we welcome all the three, doshas into our life. And we pray that we have that in correct quantity. सही मायने में हमारी जिंदगी में वो रहे. शांति शांति शांति. Why 3 times शांति? हमेशा हम 3 बार कहते हैं शांति शांति शांति. क्यों 3 बार क्यों? तो तीनों चीजें रजस तमस और तीनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर शांति के करेक्ट प्रोपोर्शन में रहे. हाँ, चलो ये एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है कि वो तीनों जहां पर हैं अपने सही मायने में अपनी जगह रहे. और I think you have explained once. Just 1 second. It's like one is for ourselves, Shanti, one is for the universe, and one is I forgot that you had explained this. first शांति is for yourself. Yes. हमारी अंदरूनी शांति, yourself. Second is for your आसपास, your family, your friends, your loved ones, your society, जहां पर आप जीवित हो, जहां रहते हो. Okay? And the third one is for the universe. Yes. All. For everyone that exists. For every creature that exists in this universe. So the third one is for the universe. So you first start from here. Remember the dharma we spoke about? पहले हम यहाँ से अपने आप से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं अपने इर्द गिर्द, फिर धीरे धीरे अपने सोसाइटी के लिए, फिर धीरे धीरे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, फिर हम we go to the universe. So that is how you spread like a lotus, dharma, but it starts from you. So this mantra is meant for us today to understand who we are, what we want from our lives, everything we feel we need. हर चीज हमें ऐसा लगता है कि हमें उसकी जरूरत है. We don't need, उसकी जरूरत नहीं है. We want, हमें वो चाहिए. So can we come out of the thought of need and move into the thought of want? मुझे ये चाहिए. I want this. I want to do this. And then move into the third step is I have. जब आप, you will move into from need
to want to I have, automatically you will move from ignorance to intelligence, from the false to the truth, from the darkness to the light, from mortality to immortality. Because you will realize I have so much. I have the knowledge. I have the wisdom. I have the love. I have the comfort. I have enough. Now it is time for me to give. It is time for me to give love. It is time for me to give, to do. For who? First for yourself, then for your family, friends, society, country, and the universe. Okay? So this is what was the whole culmination of this beautiful mantra. I hope this mantra helps you to become a better you. And more than anything else, this mantra should help you to look into the guru that lives within you. हर बार अभी आप कभी भी ये बोले तो उस गुरु को ध्यान में रखिए जो आपके अंदर है. Okay? Well, any questions on this? Or any sharing? आपने बोला कि हमें देना चाहिए, गिवर बनना चाहिए, बट जब भी रिसीव करने वाले की एक्सपेक्टेशन खत्म ही नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए? वंस यू रियलाइज कि मैं दे रही हूँ बट ये पर्सन के लिए वो इनफ ही नहीं हो रहा है, अगली बार और चाहिए ऐसे हो रहा है, तो देना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए? तो दो चीजें हैं. एक तो अपने आप से पूछो, क्या मेरे में और कैपेसिटी है? या अगर मैं दे रही हूं, इतना सा दे रही हूं या इतना सा भी दे रही हूं, क्या मैं पूरे दिल से दे रही हूं? क्योंकि अगर आप इतना भी देंगे या इतना भी देंगे, लेकिन आप अच्छे मन से अगर नहीं दे रहे ना, तो नहीं दिया हुआ ही बेटर है. क्योंकि आप सिर्फ अपने कर्मों को बढ़ा रही है, वो बोझ बढ़ा रहे हैं. तो जिस चीज से या जिस इंसान से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, अगली बार वही इंसान फिर से आएगा. क्योंकि आपने पूरी तरह से अपना कार्य तो पूरा किया नहीं. सो जो भी करो, इतना करो या इतना करो, अगर पूरे दिल से प्रेम से नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक क्लीन इंटेंशन से करो. हर चीज मैं समझ सकती हूँ कि हम इतना पूरे दिल से नहीं कर पाते हैं. कई चीजें हमें करनी पड़ती है क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा है, या हम एक जॉब कर रहे हैं तो हम हमारे काम का हिस्सा है. ओके, तो वो हमको करना है. तो कम से कम एक क्लीन इंटेंशन से करो. हाँ भाई, ये मेरी सास है, इनके लिए मुझे ये करना है. ठीक है, आई नॉट डूइंग इट फुल, बट I do it with clear intention that whatever I do, please bless this. A clear intention. Okay, the boss, I'm not happy with this job. I don't want to do this extra work, but I have to do it. Do it with a clear intention. Okay, I'm doing this because it's my responsibility towards my job. Can you do it with clear heart? Or you're doing it and you're grumbling and you're cribbing? You're only adding to your karma. Okay, that is one. So either you do it with full good intention or you don't do it at all. Number two, if you feel that you cannot give more than what you're giving, then be clear. Okay, this is my capacity. I would like to give only this much. इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगी. I'm sorry. There is a way of saying it. If you feel you are in a position where you can say it, then say it. Number three, or else you accept it
Why do you accept it? Because a lot of people will say, "Are, aise kaise?" Why do you accept it? Because in life, there are three kinds of people: doers, receivers, observers. Doers, receivers, observers. Pay attention to this. In one lifetime, आप किस महत्व से अपना जीवन, इस जीवन में आए हैं? The way you are, there is a reason. Either you have come as a doer, or you have come as a receiver, or you have come as an observer. And actually, in one lifetime, you play all three roles. You play all three roles. फर्क सिर्फ इतना है, कोई रोल आप ज्यादा प्ले करते हो, कोई रोल आप थोड़ा कम प्ले करते हो. तो किसी किसी रिश्ते में you will be the receiver, where you will receive and receive and receive. किसी किसी रिश्ते में you will be the doer. And by the way, when I say receive and doer, you can be both. You can be the predator, you can be the victim. Both. So if you are a doer, you can be the bad person also, or you can be the good person also. As a receiver, you can receive love also, or you can receive hatred also. You can receive justice also, you can, live in injustice also. So both happen with you. पर अगर इस जिंदगी में, इस जीवन में, it is meant for you to receive this बीमारियां, receive not so good things, you are a receiver. If you are meant to receive compliments, even for the smallest things you do, you are receiving a lot of compliments. You are meant to receive that. So accept it. But if you're the doer, so that means you're meant to do something for somebody. That is why you're doing it. ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये उसके भी हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो लिख के आया है, तो उसके भी हाथ में नहीं है. तो अगर कोई तुमसे एक्सपेक्ट करता है और आप वो करते हो, तो या तो दिल से करो, या ये सोच के करो कि ये मेरा कर्म है, या ये मेरा कार्य है, ये मुझे पूरा करना है. तो अगर मैं दिल से भी नहीं करूं, तो एक अच्छे दिमाग से करूं. इतना साफ रखना ही पड़ेगा. हर एक चीज जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, ये हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास चारा भी नहीं. Yeah. So does that make sense? Yeah, clear. कभी भी कोई तुमसे कोई भी इच्छा प्रकट करे ना, हमेशा ध्यान में रखो. मेरे से अभी कोई कितना कभी बोलेगा कुछ कि अच्छा ये भी करो या ऐसा करो, पर मैं अगर नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता है, क्योंकि अभी मैंने अपने आप को खुद को लिमिट किया है. तो मुझे पता है ना कि ये नहीं, मैं या तो उसको टाल दूंगी, मैं बोलूंगी हाँ मैं देखती हूँ, मैं सोचूंगी, मैं जितना बन पाएगा मैं जरूर करूंगी. और जब तुम्हारे इंटेंशन साफ होते हैं ना, तो पद्मश्री कहीं ना कहीं से ना, द यूनिवर्स विल ऑलवेज मेक इट हैपन. जो तुम्हारे लिए सही है वो सच में करता ही है, मजाक नहीं कर रही हूं. और इसके लिए मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि ग्रेटिफिकेशन करो, सिर्फ बोलो मत, लिखो. क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो वो एक लकीर बना देते हैं. यू हैव रिटन इट ऑलरेडी, अब तो पीछे जा नहीं सकते हो. तो यूनिवर्स विल डू इट फॉर यू. आज नहीं तो कल इट विल कम टू यू. बट कैन वी डू इट विद दैट इंटेंशन
Just do it. Believe me, it happens. Yes. Anything else? Any sharing? Any questions? So just to complete today's session, yes, we should do the do's and don'ts of rainy season. One basic I would like to tell you, we will do more in detail next time, but basic one I want you all to remember is that no non-veg. I don't know how many of you eat. Anyways, you should not eat non-veg, but rainy season may especially no non-veg, especially no fish. This season is mating season. Okay, this season is the mating season. So most of the seafood that you eat, the fishes are either expecting, there will always be eggs. So please imagine that means what you're eating. So this is the mating season. All the animals anyways get minimum sun जब तक वो जीवित हैं. But during the rainy season, they get no sun, literally. बिल्कुल भी जो धूप मिलती भी थी वो भी नहीं मिलती है उनको. Okay, they live in contaminated waters. जो पानी उनको देते हैं, जो पानी पीते हैं, जहां वो रहते हैं, most of them live very close to contaminated waters. They're drinking that. So please understand what you're doing. So I really suggest that absolutely avoid non-veg. And this is the season when you should also avoid leafy vegetables. Rest the whole year I will keep saying eat green vegetables, leafy vegetables. लेकिन बारिश के मौसम में हम सबसे ज्यादा और सबसे कम हरी सब्जियां खाते हैं. क्यों? क्योंकि फिर से वही चीज होती है. सारे जो हरे पत्ते होते हैं जहां वो उगते हैं उन पे कीड़े आते हैं, कीड़े बसते हैं. उनके लिए वो पत्ता एक सेफ जोन होता है और वो उसी इसमें वो उगते हैं, सब होता है. सो इस मौसम में सबसे ज्यादा हमें हरे पत्तों को अवॉइड करना चाहिए. ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्ते जो जमीन से ज्यादा पास होते हैं वो, ये सारी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए. ओके, तो फिर हम क्या खाएं इस सीजन में? इस सीजन में सबसे अच्छी चीज होती है all the dried dals, lentils, चनास. जैनिज्म में ये बहुत खूबसूरत चीज होती है जहां पर वो लोग ये फॉलो करते हैं. एंड ऑल द ड्राइड चनास, राजमा, मसूर, chickpeas. Okay, so all that, मंगोड़ी, I don't know if you all know about it, but मंगोड़ी की सब्जी, ये सारी चीजें जो सूखी होती है उन्हें आप भिगाएंगे, उसे पहले जागरूक करेंगे, उसके बाद उसको पका के खाएंगे. Okay, so all the dried things are best during this season. And सबसे खास, सबसे नंबर वन, सबसे टॉप में जो चीज आती है वो आती है, this is the best season to fast. Okay, क्यों? क्योंकि इस सीजन में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे स्लो काम करती है. Because it's raining, there is no sun, ह्यूमिडिटी होती है सीजन में, तो उसके वजह से अपने अंदर का जो डाइजेस्टिव फायर होता है, जो अग्नि होती है, वो अग्नि बहुत अच्छे से फ्लेम उसमें नहीं होता. इट इज नॉट वेरी वेल इग्नाइटेड.
So because of that, lot of people in this season get acidity issues. They get loose motions, they get stomach infections, because in this season, your digestive system is not working to its optimum. So the best thing to do is fasting. So you should fast. The more you fast, the better it is. Fourth, be very careful of the water you drink. Keep yourself hydrated, but be careful of the water you drink. इस मौसम में मैं यूजुअली कहूंगी बी केयरफुल ऑफ वेयर एवर यू आर गोइंग, कैरी योर वाटर, अपना पानी कैरी करो, क्योंकि मैं वैसे भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कभी नहीं बोलूंगी पीने को, तो अपना पानी अपने साथ कैरी करिए rather than drinking from anywhere and everywhere. Okay, so carry your drinking water and be careful of the water you drink and from where you drink it, but keep yourself hydrated. Fifth one, increase your portion of probiotics. इस मौसम में प्रोबायोटिक्स को बढ़ा दीजिए, प्रोबायोटिक्स ज्यादा खाइए, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स ज्यादा खाइए, क्योंकि आपके शरीर में जितना अच्छा बैक्टीरिया पैदा होगा उतना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा. तो बाय चांस अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब भी हो गया या इंडाइजेशन हो गया या कुछ भी हो गया, तो योर बॉडी विल वर्क, इट विल कूप, इट विल वर्क फास्टर, इट विल हेल्प टू recover better, faster. Okay, so probiotics ज्यादा खाइए. प्लीज मुझे याद दिलाइएगा अगले हफ्ते एक दिन पहले, and I will help you to understand how we can make a lot of probiotics at home. So just remind me on next Sunday and I will do that. Okay, तो we should have lot of probiotics. ये 5 बेसिक्स तो हमें फॉलो करना ही है, उसके अलावा भी हम क्या क्या कर सकते हैं, we will work on it next week. तब तक के अगर आपके कोई सवाल भी होंगे तो आप जरूर डालिएगा. आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो भी प्लीज डालिए, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे. एंड या एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर वी एंड? आपने कहा ग्रीन चीजें नहीं खानी. हम अपने घर में व्हीट ग्रास उगा के 7-8 डेज का एवरीडे लेते हैं जूस. यस यस, खुद उगाओगे तो जरूर खाओगे. खुद उगाते हैं. खुद उगाओगे तो सब कुछ खाओ, बहुत ही अच्छा है. ओके जो भी खुद उगाया है वो बिल्कुल खाओ, बिंदास. ओके ओके, उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं, तो ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए. अनदर एक्सेलेंट थिंग टू हैव इज स्प्राउट्स. इस सीजन में स्प्राउट्स को बढ़ाइए. स्प्राउट्स तो हम 12 महीने खाते हैं. हाँ, तो ये इस मौसम में स्प्राउट्स बढ़ाइए, स्प्राउट्स उगा के उसको हरा करके वो खाइए. ओके, धनिया पत्ती को नहीं खरीद के आप इनको उगा के इसको धनिया पत्ती की तरह इस्तेमाल कीजिए. ये सारी चीजें आप कर सकते हो. मेरा एक्चुअली वही सवाल था, लाइक कि ग्रीन्स नहीं खाने तो फिर ग्रीन जूस एंड स्मूदी कैसे मैनेज करे, क्योंकि अभी तो बाहर से खरीद के ला रहे पालक एंड ऑल. हाँ, तो उसमें आप क्या करने का, ये सारी चीजें उन्हें छोटे छोटे इसमें उगा लीजिए. ओके. चाहे मूंग, मोट, वीट, चिया, ये सब चीजें आप उगा सकते हो. उगा के ये सारे हरे हो जाएंगे, वो आप तोड़ तोड़ के उसको जूस बनाइए. ओके, यू हैव वाइट गॉड, पाइनएप्पल अगर मिलता है तो पाइनएप्पल का बनाइए, बीट उसका बनाइए. ओके, फ्रेश जो पत्ते आते हैं, जैसे जो छोटा स्पिनच होता है जो फ्रेश उगते हैं बहुत इजीली, वो लीजिए. गुलवेल के पत्ते लीजिए, अडुलसा के पत्ते लीजिए, जो फ्रेश आपके इसमें है वो आप यूज कीजिए. एलोवेरा लीजिए. So you can do a lot of options. Carrots, you can use carrots.
कैरेट्स तो अंडरग्राउंड पैदा होता है अपना तुम्हारा। Carrot is something, aloo, carrot, they are all underground. They are not just above the ground. Okay. So underground जो चीज उगती है वो हम क्या करते हैं, हम उसको खींच के अंदर से निकालते हैं. So that is why it gets all the nutrients from inside the earth. और आप कभी भी नोटिस कीजिए, लोग मुझे पूछते हैं कि यार तुम भी तो वेजिटेरियन हो, तुम लोग भी तो पत्ते मार के खाते हो. तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ, हम कभी भी आप पालक काटेंगे या कोई, हम उसे काट के हम खाते हैं, हम उसे खींचते नहीं है. गाजर, आपको कैसे पता चलता है कि गाजर हो गया है, उग गया है और अब उसको हम निकाल सकते हैं? जब उसके ऊपर के पत्ते जीवित होके अपने आप खत्म हो जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अब इसका जीवन हो चुका है, अब इसको हम निकाल सकते हैं, अब इसको हम खा सकते हैं. आलू का जीवन, जब आलू उगता है, ऊपर का क्या होता है, उगता है, उसके पत्ते हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, वापस वो जमीन में चला जाता है. दैट मीन्स इट इज नाउ रेडी टू रिमूव. हल्दी is a beautiful example of that. कभी आप हल्दी का झाड़ अगर आप देखेंगे, हल्दी is a very beautiful example of that. हल्दी कैसे समझती है कि अब हल्दी तैयार हो गई है? जब वो हरा भरा हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे मुरझाने लगता है, फिर वो पूरी तरह से मुरझाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है. That is the time when you understand, अब उसका जीवन हो चुका है, अब वो मेरे लिए तैयार है. So it is not that you are killing something and eating. Please remember. जब आप खींचते हो ना कोई चीज को, that means you are killing. जब आप उसको काट के ऊपर से उसको निकाल के खाते हो, तोड़ के निकाल के खाते हो, तो that means it is alive. उसमें से फिर भी जीवन उगता है. आप ग्रीन्स को कभी देखिए, ओके, ग्रीन्स को कभी देखिए, ग्रीन्स को आप ऊपर से तोड़ेंगे और निकालेंगे ना, तो भी वो उगता रहेगा. और अगर उसमें जीवन नहीं है तो वो वहीं का वहीं फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. तो व्हाई वी डू वाटर ग्रोथ? पानी में जब हम ग्रीन्स को उगाते हैं तो हम उसको एज इट इज ले लेते हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ, पानी में जब आप उगाते हो, उसको कुछ भी मत फेंको, कुछ भी मत काटो, वो ऐसे का ऐसा ले लो, ऐसे का ऐसा उसको हल्का सा उबाल लो, ऐसे का ऐसा उसको खा लो, उसके रूट्स वूट सब. यू डोंट नीड टू वेस्ट एनीथिंग. ओके, इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे अगले टाइम. Microgreens. थैंक यू. Life cycle. Okay. Thank you. Thank you everybody. Thank you so much. Big Jadoo ki Jhappi to all of you. I hope you are all a part of the gratification group. Yes. Hope all of you are writing in the gratification group. I don't know, somebody asked me, am I doing it correctly? Is that person here today? Okay. So be there as a part of it and feel the change. Yeah, feel that change. It is so beautiful. It's so nice. Let everybody else also inspire you and let yourself also inspire others. Okay. Nipu, today my big mother-in-law expired. So should I wanted to write about her to get her peace. Please So write. can I write? I can write that? Please write. Okay. Okay. Write something nice for her and we will all send her blessings. Yeah, sure. Okay. Sure, You know, sure. we're all there. Yeah, She's always, gone to a always. beautiful space. She has just left her physical body. She's gone to a beautiful. Yes. Sure.
She was 81 and she was suffering from 3-4 years. So it's better she left for heaven. So that is a beautiful way of saying it. Yeah. तो हम हमेशा Today. हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस में भी हमेशा ये कहते हैं कि जब तुम्हारा कर्म यहाँ पर समाप्त हो गया, तुम्हारा समय आ गया, उस समय तुम ये जीवन को, इस शरीर को छोड़ के चले जाते हो, छोड़ के चले जाओ, अनोखी दुनिया में जाते हो, और उस दुनिया से बल्कि तुम कभी वापस नहीं आना चाहते हो। लेकिन अगर कुछ कार्य रह गया है तो तुम्हें आना पड़ता है। तो आना पड़ता है। वो तो इसीलिए तो अच्छे कर्मा करो। तो मैं यही चाहूंगी कि आई होप एंड प्रे दैट योर मदर इन लॉ हैज कंप्लीटेड हर टास्क ऑन दिस अर्थ। Sure. खुशी खुशी गई। हाँ जी। वेरी